noise, crackers. Dressing up. लाइट्स, मिठाइयाँ. इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम. पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं एक दूसरे को. Festival of lights. Dress up nicely, eat good food. Lights, colors. Yeah, houses decorated with lights and wearing ethnic clothes. Diya. I mean, for me, it's a time when things get really noisy and ugly, and you know, I love animals, so I think it's a horrible time for them. It was a waste of money. Crackers, loud sound. घर वालों के संग टाइम स्पेंड करना. Shopping. Traffic jam. Haven't given it a thought ever. What to say, I don't know. I suppose being generous to people who don't have much. Introducing light into darkness, positivity into any kind of negativity. Darkness, removing darkness. दूसरे से मिलजुल कर रहना, दूसरों में खुशियाँ बांटना. With time, with patience, there's victory of the right over wrong. Celebrate what you have in life. अगर आप सच के साथ हैं, अगर आप अपने बेसिक्स पे सही हैं, तो आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कितना भी टफ हो. अब आखिर में आके इसके वजूद डे बाय डे बदलते जा रहे हैं. तो सीख के पीछे तो हम लोग बेसिकली नहीं गए इतना. Choose happiness, hope, like things can be all right. Yeah, live and let live. Festivals in India in general are very commercialized, and they're about spending, and lots of people who can't spend. Everyone can't spend the same amounts of money, so it's quite sad for many people. हमारे खुद का डर भी हो सकता है. दूसरे के खिलाफ मतलब द्वेष की भावना भी, ये भी अंधकार हो सकता है. I think we keep a lot of negative thoughts, a lot of depression in the society. A lot of negativity amongst us in our relationships towards other people, towards society in general. In today's life especially, everyone is so busy struggling for jobs, money and everything. So of course that darkness is there inside. पहले पैनी सोच नहीं रखते थे लोग बाग. पहले के ज़माने की बता रहा हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, पर फिर भी इतनी पैनी सोच नहीं रखते थे. लेकिन अब सोच पैनी हो गई है, और वो जो अंधकार वाली बात है, सिर्फ अंदर से अंधकार दूर नहीं होता इससे. I think the lifestyle that we have these days, the competition and so many, with this generation, there's so many heartbreaks and everything. I think there's more darkness than ever. I mean, what I think is ego is the first thing that I think. Ego and trying to get ahead of someone. तो उसके अंदर का जो लालच है वो सबसे बड़ा अंधकार है. उसकी Jealousy हो गई. ये तो उसका जो लालच है वही उसको उसकी बुराइयों की तरफ लेके जाता है. पहले और आज के समय में ना समय बदल गया. अब ये मानवतावादी से भौतिकवादी हो गया है. इसलिए अब जो हमारे अंदर का अंधकार है वो सारा उसी जो अब मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, इट इज़ ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हम I don't know, help as many people as possible when you come across them in their day-to-day life, not be rude to people, just be generally nice to people, I guess. Just be a good person. कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा. We can forget old grudges and all, We can be friend with people whom, we have stopped talking to and all. We can be friend with them again. To basically eliminate the darkness, self-reflect, make changes in our own selves. First of all, we need to eliminate the hate that we have towards each other. And also we need to understand that in the end we're all one. We cannot just, the things on which we discriminate, how we spread hatred, I think that needs to go first. Our mates at house, the labours, everyone. If we just we give gifts to each other, family, friends, why don't we give gifts to them also? So a small step would also do wonders. So yeah. Like inch by inch, everything is a cinch. जैसे. So अगर आप कोई भी चीज़ छोटा-छोटा करके करते हो, and you do it over a long period of time, it's not that you have to do a lot in a short period. You have to do small chunks of things in a long time. Then you can overcome any kind of negativity. And any time is a Diwali time for you if you do that. उसके लिए इंसान को थोड़ा मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दे. राइट, वही चीज़ है ना. अंदर की रोशनी तभी हम ला पाएंगे जब किसी और की ज़िंदगी में खुशहाल उजाला लाएंगे. तो वो उससे बड़ा खुशी और चीज़ क्या हो सकती है. Interacting with others, connecting with each other, so that eliminates negativity. कहते ना, जो दिल से नहीं करता बुराई का इरादा, बंदों से वो तौबा करे, वो तोड़ दे वादा,
जल्दी जो संभल जाए वो नादान नहीं है, ईमान जिसमें हो वो ईमान नहीं है। दुनिया में हमेशा तो नहीं रहता अंधेरा, इंसान जहाँ जागे वहीं है सवेरा।